बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमसीक्यूज रिवर। और आज मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ एक न्यू सब्जेक्ट के बारे में। मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी और वो सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज़। ठीक है, दैट इज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट वेयर यू हैव टू यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी डिफरेंट जेंडर्स। ऑल राइट। अच्छा, जेंडर स्टडीज़, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जेंडर. So for that purpose, first of all, you should know that what is gender. ठीक है, gender क्या होता है? What do we have to mean when we are saying that this the word gender? Okay. Gender की अगर हम एक simplest form of definition अगर हम देखते हैं तो that is the psychological, cultural and behavioral aspects of a human being. किसी भी एक इंसान के, हम इसमें किसी मेल या फीमेल की बात अभी नहीं कर रहे, किसी भी इंसान का साइकोलॉजिकल यानी कि नफ्सियाती तौर पे वो इंसान कैसा है, कल्चरली किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसके अलावा उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हैं, ये बताता है कि किसी इंसान का जो जेंडर है वो क्या है. हमारे पास डिफरेंट जेंडर जो हैं वो मौजूद हैं. ठीक है, विमेन उर्तें एक जेंडर है. ठीक है, गर्ल्स एक जेंडर है. ठीक है, मेन एक जेंडर है, बॉयज जेंडर हैं. ट्रांसजेंडर्स यानी कि वो लोग जो कभी ऑफ कोर्स दे आर मेल, इधर मेल फीमेल, देयर जेंडर इज नॉट डिफाइंड. इंटरसेक्स पीपल जिनका जेंडर जो है वो बाय बर्थ डिफाइंड नहीं होता. ठीक है. अच्छा, जूडिथ बटलर इज अ फेमिनिस्ट. ठीक है, जूडिथ बटलर जो हैं वो ये कहती हैं जेंडर इज नॉट द रिजल्ट ऑफ नेचर बट इट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड. कंस्ट्रक्टेड तो कहते हैं बनाया जाना, प्रोड्यूस करना. ठीक है, इसके अलावा सोशली मीन्स सोसाइटी इज गोइंग टू क्रिएट, सोसाइटी इज क्रिएटिंग दिस जेंडर. अब जेंडर में सोसाइटी क्या क्रिएट कर रही है? रोल्स क्रिएट कर रही है. ओके, लेट्स हैव सम टर्म्स फॉर द जेंडर. जेंडर बाइनरी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जेंडर बाइनरी, कंसीडरिंग दैट देयर आर ओनली टू जेंडर्स इन द वर्ल्ड, मेल एंड फीमेल. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो जेंडर्स ही हैं. जेंडर बाइनरी का मतलब ये होता है कि दुनिया में सिर्फ दो जेंडर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, एक मेल है और एक फीमेल है. ठीक है, सिस जेंडर इज द जेंडर दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ द बर्थ. जब एक इंसान की पैदाइश होती है उस वक्त उसका डॉक्टर जो डिक्लेयर करता है उसका जेंडर, या तो वो एक बॉय है या वो एक गर्ल हो सकता है. ठीक है, या वो एक बॉय हो सकता है या वो एक गर्ल हो सकती है. तो इसके कहते हैं जो आपका नेचुरल जेंडर आइडेंटिफाई हुआ था एट द टाइम ऑफ बर्थ, दैट इज द सिस जेंडर. ए जेंडर, व्हाट इज ए जेंडर? ए जेंडर इज एनी अनआइडेंटिफाइड जेंडर. दैट मीन्स अ पर्सन इज नॉट कंसीडरिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू एनी जेंडर. ठीक है, कोई अनआइडेंटिफाइड जेंडर है. यू कांट से कि एक इंसान जो है वो बॉय है या वो गर्ल है. ट्रांसजेंडर आर दोज पीपल, जैसे कि यहाँ पे जो वर्ड है ट्रांस, ठीक है, ये इस चीज को शो कर रहा है कि दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड. ओके, एट द टाइम ऑफ बर्थ दे वर ईदर मेल, but with the passage of time they did not show any interest in male roles or the characteristics of male, and that person is inclined towards female gender, so they have changed their genders. That means the transformed gender is the transgender. Yeah, if a person is born female but has converted or inclined towards male gender, male roles, that is known as the transgender. That they have transformed their genders from the natural towards different. Okay, to which they were inclined psychologically or socially, they were inclined. For example, a boy is born but he doesn't like his personality as a boy. He's inclined towards the towards the female toys. He's inclined towards the female clothes and he likes makeup and everything, so he is going to transform his gender to the female gender. However, he is naturally a male gender. Gender queer is the word. Queer कहते हैं अजीब. ठीक है, something that is very you can say shaky. ठीक है, queer, gender queer is the person whose gender is not identified, or that person you can say intersex, like the people
who are born with unidentified gender. You can't say if a baby is born, you can't say this baby is a girl or a boy. So they are the intersex people, come in the category of genderqueer. The transgenders, of course, they are under the category of genderqueer. Genderqueer is the person whose gender is not defined, identified at all. ठीक है, ना तो वो बॉय कहला सकते हैं, ना वो गर्ल कहला रहे हैं, बल्कि जेंडर, उनकी जो जेंडर है उसकी आइडेंटिफिकेशन में एक यू कैन से लैक है. ठीक है, लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर जेंडर, सो दे आर नोन एज द जेंडर क्वीर. नाउ इफ यू आर understanding this lecture and you want me to make more lectures like this on gender studies, I'm going to simplify this whole part, the gender studies, this whole subject, in very easy and simplest forms for you. If you like this and if you want me to make more lectures on this subject, please tell me in the comments, and of course you have to subscribe my channel first of all, and then I'm going to make more these sort of lectures for you. Thank you so much for watching the video. Allah Hafiz.